We know reports are coming in which say that Hamas has in fact released 2 American hostages. Remember, nearly 200 people had been taken hostage by Hamas amid this war. And the information that we have is that a mother-daughter duo have in fact been just released by Hamas. For more on this, I'm joined by my colleague Uma Shankar. Uma, अभी तक के लिए क्या जानकारी है हमारे पास? जी देखिए, एक टेलीग्राम मैसेज के जरिए हमास की तरफ से जानकारी दी गई है कि अल कासम ब्रिगेड, जो कि हमास का मिलिट्री विंग है, उसने 2 अमेरिकी जो नागरिक हैं उनको रिहा किया है। और ये नागरिक जो हैं वो माँ और बेटी हैं, और ये भी कहा गया है कि माँ की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए उनको रिहा किया जा रहा है। और इस मैसेज में साफ तौर पे कहा गया है कि मानवीय आधार पर ये रिहाई की जा रही है। एक अहम बात यह है कि इसमें यह भी कहा गया है कि कतर के जो एफर्ट्स हैं, जो मीडिएट किया है कतर ने, उसकी वजह से रिहाई की गई है। हमको पता है कि जो अमेरिकी विदेश मंत्री जब इजराइल आए थे उसके बाद 6 देशों के दौरे पर गए थे, और कतर भी वो गए थे, और वहां पे खास तौर पे उन्होंने बंधकों की रिहाई को लेकर एक मध्यस्थता की उनसे मांग की थी। तो कतर की तरफ से जो एक कोशिश की गई उसका नतीजा है कि ये 2 अमेरिकी जो नागरिक हैं उनको रिहा किया गया है। और इसमें एक खास बात ये भी है कि अभी जब बाइडेन इजराइल के दौरे पर आए थे उसके बाद उन्होंने $100 मिलियन जो है गाजा के लिए उन्होंने मानवीय मदद के तौर पर देने का ऐलान किया। तो जो एक अमेरिका की तरफ से कोशिश की जा रही है, एक तो मध्यस्थता के जरिए, और दूसरा गाजा में जो आम सिविलियन जो मारे जा रहे हैं उनकी मदद के लिए, और उस मानवीय क्षति को कम से कम करने के लिए भी इजराइल के पीएम से बाइडेन ने बात की। तो लगता है कि इन सब वजहों से हमास ने अपनी तरफ से एक जेस्चर दिखाया है और 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा करने का ऐलान किया है, शायद इस उम्मीद में कि जो इजराइल की बमबारी है वो रुके, क्योंकि लगातार हमास की तरफ से ये शर्त रखी जा रही है कि इजराइल अगर बमबारी रोके तो वो बंधकों को रिहा कर सकता है। तो शायद एक जेस्चर के तौर पे 2 बंधकों की रिहाई की बात उसने की है, लेकिन आगे तकरीबन जो 200 बंधक उसके पास हैं, क्या उनकी रिहाई वो करता है या नहीं करता है, ये देखने की बात होगी। राइट उमा, आप ग्राउंड पे थे, आप वहां पे बहुत दिनों से आप कवर किए हैं वहां पे। डू यू थिंक दिस इज अ रिजल्ट ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव हेल्ड ऑफ ग्राउंड ऑफेंसिव, कि अभी तक इजराइल ने ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं की क्योंकि दे वर एक्सपेक्टिंग कि ये हॉस्टेज सिचुएशन जो है बहुत ही क्रिटिकल और सेंसिटिव सिचुएशन, उसमें उनको किसी तरह से टू गेट एज मेनी पीपल आउट ऑफ गाजा, इसीलिए अभी तक ग्राउंड ऑफेंसिव ऑन होल्ड पे है? जी देखिए, ग्राउंड ऑफेंसिव होल्ड पे है, उसके पीछे कई तरह की वजह बताई जा रही है। एक तो ये है कि अमेरिका का भी दबाव है इजराइल पर कि ग्राउंड ऑफेंसिव ना करें तब तक जब तक कि ये इंश्योर ना हो जाए कि गाजा में जो आम लोगों का जान माल का नुकसान है वो कम से कम तर हो। दूसरी बात ये भी है कि इजराइल को भी इस बात का अंदेशा है कि एक बार वो गाजा में घुसे तो उनके सैनिकों की भी कैजुअलिटी बड़े पैमाने पर होगी, क्योंकि हमास भी वहां पर पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ है। और तीसरी बात यह है कि एक बार अगर ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू हुआ तो जो अरब देश हैं जो कि लगातार इस बात को लेकर धमकी और चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू हुआ तो वो भी अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे, चाहे वो ईरान हो या इस बाबत अगर जॉर्डन की तरफ से भी बयान देखें तो जो अरब कंट्रीज हैं वो ग्राउंड ऑफेंसिव को बहुत ही एक अलग तरह से लेंगे। तो इन सब वजहों से इजराइल की तरफ से ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं किया गया। और हमास ने पीछे एक शर्त भी रखी थी, जो 6000 फिलिस्तीनी जो लोग हैं जो कि इजराइल की जेलों में बंद हैं उनको रिहा किया जाए तब वो बंधक को छोड़ेंगे। हालांकि इस बाबत जो बातचीत है वो आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन अब जो मौजूदा माहौल है उसमें ये लगता है कि हमास जो है वो अपनी तरफ से एक जेस्चर दिखाकर 2 अमेरिकी बंधकों को रिहा करके वो एक ऐसी स्थिति चाहता है जिसमें कि एक मिडिल जो पाथ है वो लिया जाए। लेकिन देखना है कि 2 अमेरिकी बंधकों की रिहाई से क्या इजराइल पर अमेरिका और ज्यादा एक दबाव बनाता है कि वो ग्राउंड ऑफेंसिव को आगे न बढ़ाए और बमबारी रोके ताकि बाकी बंधकों की भी रिहाई संभव हो सके। Right, Uma, thank you so much for joining us with that. I'm also joined by my colleague Ghazali for more on this. Ghazali, we saw President Biden actually visiting Israel amid this war, amid the tension, and this is actually quite unprecedented for an American president to visit a wartime zone like this. So do you think that the release that we see of 2 American hostages by Hamas, is this in some way a result of Biden's visit? Sir, in this ball reported just 3 days ago, in front of Qatar Prime Minister was with the Hamas of and that category dinner.
Right, Ghazali, I'm sorry I have to interrupt you there. There's some technical difficulty with your line. We'll try and dial you once again. But just to bring for our viewers the latest that we are covering, there are 2 American hostages, reports coming in of 2 American US hostages, US nationals who have in fact been released by the Hamas. They had been in Hamas custody since the beginning of the conflict there at Gaza Strip. It's a mother-daughter duo. We are being told, as per reports, that the woman, the mother in this case, was in fact very unwell, and apparently they have been released on humanitarian grounds. At the moment, what we do know as per reports is that the 2 US nationals have in fact been handed over to the Red Cross and are on their way out of Gaza. Let me go back to my colleague Ghazali. I believe the line is clearer now. Yes, Ghazali, if you could just answer the question that I posed to you, that whether or not these 2 hostage releases are a result of Biden's efforts. Yes, certainly. And what I was repeating a short while ago, that we had reported that how in front of Secretary Blinken in Qatar, the Qatari Prime Minister had told the press reporters that the Hamas office will not be closed, and citing the reason that it always maintains the political communication going. And this is exactly what we are picking up, is that Qatar has been the chief negotiator, and even during many prisoner exchanges in the past, or when the hostages have to be retrieved from Hamas, Qatar and Egypt always play the mediator role. And even in this one, this hectic shuttle diplomacy of Secretary Blinken and finally Joe Biden coming in to Tel Aviv and also getting a snub from the Arab world, it has all played up together. So just giving it back to Biden that his diplomacy worked will be a sort of far-fetched statement, but certainly it has worked. It has come immediately after he has left, and this is also one of the reasons that why Israel has been suggested by the U.S. administration not to get into the ground invasion as well, because that will also endanger the rest of the hostages there. And American nationals that are still hostages with Hamas, that is the priority of U.S., that one, that hostages are released safely or recovered safely, and the second, that not a larger war breaks out in the Middle East, because that will be a severe hit to his credibility as a person who is vouching for peace and stability in the Middle East, as 2 wars have broke out under his tenure, one between Ukraine and Russia, and everybody thought that it will not stretch more than a year, but it's still going on. And the second one is on the verge of a larger war if Israel doesn't stop bombing Gaza. But besides Mr. Biden's visit, there were other factors also which can be considered for why the hostages have been released, like Israel saying that it will not allow the aid to get in until every hostage is released. Right. Now, these every factors have certainly contributed to the release of 2 hostages.